नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में फैले हुए एक ऐसे कैंसर की जो पूरी दुनिया को उग्रवाद के चंगुल में, उग्रवाद की आग में धकेलने के लिए तत्पर रहता है। और ये जो कबाल है, ये जो ग्रुप है, वो कोई सामान्य लोग नहीं, बल्कि ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज और कई सारी जगहों पर प्रोमिनेंट पोजीशंस होल्ड करते हैं। और वहाँ से वे लोग रेडिकलाइजेशन और रेडिकल हुए लोगों को और उनके एक्शंस को समर्थन देते हैं या फिर उनको बचाते हैं। भारत में भी ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर किसी आतंकवादी को भारतीय सेना द्वारा मार गिराया जाता है तो उसको बचाने के लिए कई सारे एक खास तबके के लोग उसको हेडमास्टर का बेटा बताते हैं, या फिर उसको स्कॉलर बताते हैं, या उसको इंजीनियर बताते हैं। और इस तरह से अलग अलग कहानियां घड़ के लोगों को भटकाने का काम करते हैं। इसी प्रकार के ग्रुप्स सिर्फ भारत में ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ऐसा ही एक ग्रुप सामने आया है हाल में यूएस में से। और ये एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसे एलिट्स का ग्रुप है जो एकेडमिक्स और खास करके यूएस में एकेडमिक्स कंट्रोल करते हैं। ये एलिट्स हैं हार्वर्ड, MIT और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के रिप्रेजेंटेटिव्स। कल यूएस के हाउस में उन लोगों के ऊपर हियरिंग हुई और वहां की जो हाउस रिप्रेजेंटेटिव है एलिस स्टेफानिक, उसने कुछ बहुत ही सटीक प्रश्न पूछे यहूदियों के ऊपर हो रहे हमले से संबंधित। देखने वाली बात यह है कि किस तरह से ये लोग उन उग्रवादियों का और उन उग्रवादियों की एक्शंस का और उनके प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से, ये कहकर कि इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इस पूरी बात को अगर हम आपको कहेंगे तो वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन हो जाएगी। उससे बेहतर है कि हम आपके साथ डायरेक्टली वो वीडियो साझा करें, जिससे आप खुद देख पाएं, खुद समझ पाएं कि किस तरह से इस एकेडमी में बैठे हुए लोग ऐसे उग्रवादियों का समर्थन करते हैं और उनको कॉन्स्टेंटली बचाने की कोशिश करते हैं, देयर बाय उनको बढ़ावा देते हैं। तो जितने जिम्मेदार हमास के आतंकी हैं यहूदियों की मौत के, या फिर जितना जिम्मेदार बिन लादेन है अमेरिकन की मौत के लिए, या फिर जितना जिम्मेदार पाकिस्तान है भारतीयों की मौत के लिए, उतने ही जिम्मेदार ये वामपंथी विचारधारा के लोग भी हैं जो एकेडमिक्स में बैठे हैं, जो जर्नलिज्म में बैठे हैं और अपने आप को सेंट्रिस्ट बताते हैं, न्यूट्रल बताते हैं, इंडिपेंडेंट बताते हैं, जबकि इनका घिनौना रूप हम सभी इस वीडियो में फिर से एक बार देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो वीडियो। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। और वीडियो को सुनने के बाद आपकी क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में और किस तरह से ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए इस तरह के लोगों को? आपके विचार हमारे साथ कमेंट में वीडियो के बाद जरूर साझा करें। आइए सुनते हैं वो हियरिंग। At MIT, does calling for the genocide of Jews violate MIT's code of conduct or rules regarding bullying and harassment? Yes or no? If targeted at individuals, not making public statements. Yes or no? Calling for the genocide of Jews does not constitute bullying and harassment? I have not heard calling for the genocide for Jews on our campus. But you've heard chants for intifada. I've heard chants which can be anti-Semitic depending on the context when calling for the elimination of the Jewish people. So those would not be according to the MIT's code of conduct or rules? That would be investigated as harassment if pervasive and severe. Ms. McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment, yes. I am asking specifically calling for the genocide of Jews. Does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. So is your testimony that you will not answer yes? If it
is if the Yes speech or no? becomes, if the speech becomes conduct, it can be harassment. Yes. Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no? It can be harassment. The answer is yes. And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be, depending on the context. What's the context? Targeted as an individual, at an individual. It's targeted at Pervasive. Jewish students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them? Do you understand that dehumanization is part of antisemitism? I will ask you one more time. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? Anti-Semitic rhetoric when it And is it crosses into anti-Semitic rhetoric? Anti-Semitic rhetoric when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct, and we do take action. So the answer is yes, that calling for the genocide of Jews violates Harvard Code of Conduct, correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board.